Welcome to this lecture on electromagnetic waves. In this lecture, we'll discuss the properties of electromagnetic waves. So there will be a conceptual understanding of properties, then we can list those properties. तो जैसे हम proceed करेंगे, we will generate some of the equations और फिर आप आखिर में as a summary उन सब properties को sum up कर सकते हो which become significant for us to understand. Electromagnetic waves का जो origin है, that origin is theoretically based on the work carried out by Coulomb, then mathematical formulation of Gauss, then the work carried out by Michael Faraday, then work carried out by Biot Savart and Ampere, then work carried out by Clerk Maxwell in 1862. तो ये equations हम sum up करते हैं as a story of two line integrals and two surface integrals. You are already aware of some of these. So हमारे पास ये है एक surface integral, that if I take surface integral of electric field vector, this becomes equal to Qn divided by epsilon naught. ये आपको याद होगा, this is Gauss's law of electrostatics. Then we have another surface integral, the surface integral of magnetic field, which is equal to 0. This is what we call as the Gauss's law of magnetostatics. Then we have the line integral of electric field, which is E dot dl. This you understand is Faraday's law, equal to minus d over dt of phi b. Phi b here is magnetic flux, so this is Faraday's law. Then we have the line integral of magnetic field. That line integral of magnetic field is B dot dl is equal to mu 0 times I. This one is I conduction current plus I displacement. So I write as I conduction plus I displacement. So I may put this equation like this. This is mu 0 into I plus displacement current is defined as epsilon naught into d over dt of phi e. And this is how we have noted four equations. The last one is Ampere-Maxwell law. So this is Ampere-Maxwell law. So we have noted down the four equations which we collectively call as the Maxwell's equations of electromagnetic theory. So this is collectively called as the Maxwell's equations. These Maxwell's equations have something more to them, that if we want to derive some more results out of these equations, तो एक equation जो आपको फिर से याद है, which is called as Lorentz force. So this is F equal to QE plus Q into V cross B. तो ये Lorentz force equation जो है, this would be another very important relation जो हम कई बार use करते हैं. Now these four equations can be expressed. तो ये जो हमने अभी फॉर्म लिखा है, this is called as integral form of the equations, क्योंकि हर एक इक्वेशन में आप कहीं ना कहीं कोई सरफेस इंटीग्रल या कोई लाइन इंटीग्रल देख रहे हैं. So this is the integral form of the equations. It is possible to express these equations in differential form. लेकिन जो इनकी differential form में expression की बात है, there it becomes sometimes a convenient way to introduce operator जिसको हम एक differential operator कहते हैं. It's a differential vector operator which we use in the vector algebra or vector analysis. It is called as del operator or nebula operator. So del or nebula operator, and this is I cap into delta over delta x plus j cap. तो ये इसकी definition है. This is derivative with respect to x, partial derivative with respect to x, partial derivative with respect to y, and partial derivative with respect to z. यहाँ इस time this may not be within the scope of discussions, लेकिन आप इसको थोड़ा सा अगर याद रख लें, that way you will sometimes see कि जैसे ये इक्वेशन है,
this equation can be transformed in the form expressing it as del, like del dot E is equal to rho divided by epsilon naught. This is read as divergence of E equal to the rho. Rho is the charge density, charge per unit volume divided by epsilon naught. And similarly, we can express them, express the others also. So that way it will become a story of 4 differential operations. एक होगा del dot E, दूसरा होगा del dot B, तीसरा होगा del cross E और चौथा होगा del cross B. तो ये चारों ऑपरेशन जो है these will define 4 Maxwell's equations और इनकी एनालॉजीज ये हैं. ये बन जाएगा del dot E, ये बन जाएगा del dot B, ये बन जाएगा del cross E, ये बन जाएगा del cross B. सो इस फॉर्म को या इस फॉर्मुलेशन को हम इस सिलेबस के स्कोप में नहीं देख रहे हैं. आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस, बट इफ यू कम अक्रॉस दिस राइटिंग समहाउ, आप समझ सकते हैं कि वी आर यूजिंग द डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल ऑपरेटर फॉर मेकिंग सम ऑपरेशंस व्हिच अदरवाइज आर represented to us as surface integral and line integral. जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है, चाहे आप डेल ऑपरेटर के तरीके से लें या इन लाइन इंटीग्रल के तरीकों से लें, द फिजिकल इंटरप्रिटेशन विल बी सेम. सो यू शुड बी सेटिस्फाइड दैट इफ यू नो दीज 4 इक्वेशंस यू आर नॉट मिसिंग एनीथिंग एज सच. आपकी जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है रिजल्ट्स की, वो बराबर एक जैसी ही है. हाँ, थोड़ी सी उसमें मैथमेटिकल कन्वीनियंस जरूर है. In differential form, there is a slightly better mathematical processing becomes easier, क्योंकि जब हम इन इक्वेशन से एक वेव इक्वेशन डेराइव करते हैं, there we have to use those equations in the differential form. It can be proved now, जैसे मैं बात कर रहा था कि अगर हम डेल ऑपरेटर को यूज करके काम करें, so we can prove something like this कि जो इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर है, which is the 2 vectors appearing in these equations, तो इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स को आई विल बी एबल टू मैनिपुलेट देम एंड डिटरमाइन और derive 2 relations. The first relation is that we find that second derivative of electric field vector with respect to time becomes equal to 1 by mu naught epsilon naught into second derivative of E vector with respect to x. तो हम एक 1 डायमेंशनल केस ले रहे हैं जहां पर हमारे पास एक 1 डायमेंशनल चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है. Changing electric field, you understand, is that electric field is changing its magnitude and direction with respect to time. Now this equation, which we write as second derivative of electric field with respect to time is equal to 1 by mu naught into epsilon naught into second derivative of E with respect to x, is true for a electric field which is 1 dimensional and is changing with respect to time. और mu naught आपको याद होगा is permeability of free space and epsilon naught is electric permittivity of free space. अगर हम इसको solve करके देखें that what form of E as a solution will come out, it comes out something like this, that we have E equal to E0 into sin kx minus omega t. यहाँ पर जो k और ओमेगा है वो k होगा 2 pi by lambda और जो ओमेगा है this is 2 pi n. N is frequency of the wave and lambda is its wavelength. You can also see later that omega by k will be the velocity of the wave. We will also find out कि अगर इन्हीं 4 इक्वेशंस को, मैक्सवेल की इक्वेशंस को हम फर्दर थोड़ा प्रोसेस करें, this can also be proved to be true that we have the time variation of magnetic field, second derivative of magnetic field with respect to time becomes 1 by mu naught epsilon naught into second derivative of magnetic field with respect to x. फिर से हम एक 1 dimensional magnetic field की बात कर रहे हैं और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए what form B will have? B will have the form, it will be B0, which we call as amplitude of magnetic field or maximum value of magnetic field which it can take into sin kx minus omega t. और फिर से k और ओमेगा की जो वैल्यूज हैं they are given here. We can also prove from here that if we take E0 by B0, we find out it comes out to be C. What is C? C is equal to 3 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकंड. अब ये C कहां से आया?
See, if you see either of these equations, when we express the wave equation in physics, we have wave equation in physics given by this type of expression. This period is psi, so we have second derivative of psi with respect to time equal to velocity square. यहाँ जो term आएगी coefficient, that will be velocity square second derivative of psi with respect to x. See, this is what we call in physics as wave equation. Wave equation. इस वेव इक्वेशन को अगर आप इन दो के साथ कंपेयर करते हैं, यू विल रियलाइज कि द वे वी एक्सप्रेस इन केस ऑफ दिस साई इक्वल टू साई जीरो इंटू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, हमने तकरीबन वही प्रिस्क्रिप्शन यहां भी यूज किया है, मगर जो वेलोसिटी स्क्वायर है इसमें, दिस वेलोसिटी स्क्वायर कैन बी रिलेटेड टू द कोएफिशिएंट हियर ऑफ second derivative of E या second derivative of B, so that coefficient is 1 by mu naught C naught. अगर मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड है वैक्यूम में, C is speed of electromagnetic wave in vacuum, then you will see कि जो हमारे पास C की वैल्यू है, that comes out like this, that velocity square which I call as now C square is equal to 1 by mu naught epsilon naught. Now can we find the value of C square? Very simple. आप C square की वैल्यू निकाल सकते हैं. The value of C square will come out by giving the values to mu naught and epsilon naught. So you remember that when I write C square equal to 1 by square root of 1 by mu naught into epsilon naught, I can express it like this. I have 1 by mu naught की वैल्यू होती है 4 pi into 10 raised power minus 7. So the value of mu naught is 4 pi into 10 raised power minus 7 Henry per meter. और epsilon naught की वैल्यू होती है, we have 8.85 into 10 raised power minus 12 farad per meter. लेकिन epsilon naught के लिए मैं ये कह सकता हूं that if I take the value of 1 by 4 pi epsilon naught, it comes out to be 9 into 10 raised power 9. So उस लिहाज से आप देखें कि this value of 9 into 10 raised power 9 will be the value which we will be using, and the unit here will be meter per farad. मीटर पर फेरेड हमने फेरेड यूज किया है यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, और जहां आप मीटर की बात करते हैं दैट इज द डिस्टेंस. इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, तो आप कूलम्स लॉ को देख के आप 1 by 4 pi epsilon naught की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हो. इट विल बी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर डिवाइड बाय चार्ज स्क्वायर. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ 1 by 4 pi epsilon naught. तो यहां से आप देख सकते हो दिस विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. तो अगर आप मीटर पर फेरेड से सेटिस्फाइड नहीं हो, यू कैन यूज द यूनिट फॉर दिस 1 by 4 pi epsilon naught न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. सो इसका यूनिट हो जाएगा. सो आई कम बैक टू दिस. नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट आई हैव सब्स्टिट्यूटेड एंड आई राइट हियर एप्सिलॉन नॉट लाइक दिस ओनली. अभी थोड़ी देर के लिए इसको मैं एप्सिलॉन नॉट ही लिख रहा हूं बिकॉज देयर कैन बी सम इजी स्टेप विच वी कैन इनिशिएट फर्दर. अब आप देखें कि मेरे पास आ गया 4 pi epsilon naught. So I can write 4 pi epsilon naught. 1 by 4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 raised power 9. So I separate it out. 1 by 4 pi epsilon naught multiplied by 1 by 10 raised power minus 7. So आप अब 1 by 4 pi epsilon naught को वैल्यू दे दें 9 into 10 raised power 9. So this becomes 9 into 10 raised power 9 divided by 10 raised power minus 7. On the left hand side, this is equal to C square. So this becomes C square is equal to 9 into 10 raised power 16, which I can take square root, and I will get C equal to square root of 9 is 3 and square root of 10 raised power 16 is 10 raised power 8 meter per second. This result is a very significant result which was established by the work of Clerk Maxwell. What we call as a result which unifies electricity, magnetism and optics. क्योंकि जब 1862 में ये रिजल्ट हमारे पास आया
surprisingly at that time it was found that velocity of light, which had been determined by Foucault and Fizeau about 12 years beyond that, उससे पहले 1850s या 1849 में Fizeau and Foucault had found the velocity of light in vacuum, so that velocity matched. तो इस रिजल्ट की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है कि इट ब्रॉट ए यूनिफिकेशन बिटवीन ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और प्लस मोर दैट दिस रिजल्ट इज लेटर समहाउ सिग्निफिकेंट फॉर डीलिंग विद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. और अब जो ये आपने रिजल्ट एस्टैब्लिश किया, दिस रिजल्ट शोज कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, चाहे वो किसी भी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की हों, जब वो वैक्यूम में चलेंगी दे विल ट्रैवल विद द सेम वेलोसिटी, which is something very very significant, कि चाहे उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज होती रहे, the velocity will remain same. So that means when I write c is equal to n into lambda, velocity is equal to frequency into wavelength, I can have any frequency and any wavelength. आप बात कर ले सपोज इंफ्रारेड लाइट या विजिबल लाइट की. विजिबल लाइट में मैं वायलेट कलर ले लेता हूं. द वायलेट कलर विल हैव द वेवलेंथ ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम, but its frequency can be determined by giving a value to c, that is 3 into 10 raised power 8. So this value 3 into 10 raised power 8, if combined with 4000 angstrom, will give us the value of n. N is frequency of this wave. We can similarly go for changing the values of lambda and keeping this value 3 into 10 raised power 8, you keep on getting newer values of n. So हम इस process को एक prolonged स्पेक्ट्रम पर ले सकते हैं. स्पेक्ट्रम मीन्स वी कैन टेक ए रेंज ऑफ वेवलेंथ्स एंड वी विल ऑब्टेन ए रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज. दैट इज व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. और अब उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो अलग अलग आपको वेव्स मिलेंगी, जैसे यू हैव विजिबल, यू हैव इंफ्रारेड, you have microwaves, you have ultraviolet, you have gamma rays, you have X-rays. They will have some different properties in terms of how they penetrate into the matter, how they cause the ionization of matter. What are their applications? वो पार्ट तो वैरी होगा, लेकिन एक चीज जो यूनिफाइंग है वो ये है कि all these electromagnetic waves of any frequency and wavelength, when put into vacuum, they travel with the same velocity. This is a very important property. And the ratio of the peak value of electric field and peak value of magnetic field, E0 by B0, becomes equal to C. Next is that when we talk about the nature of electromagnetic waves are actually transverse in nature, and how they exhibit their transverse nature, it will be like this कि transverse oscillation में जो हमारी oscillations होती हैं, they are perpendicular to the direction of propagation of wave. So if I take a certain plane, ये मेरे पास एक plane है, इस plane में एक oscillation जो sinusoidal हो, क्योंकि ये अभी हमने देखा that the solution to wave equations which we write corresponding to E and B, they are sinusoidal in nature. तो ये एक sinusoidal oscillation है. अब ये इस oscillation को आप समझ लें कि ये बोर्ड में हो रही है, up down like this in this board. There is another plane like this जिसको आप perpendicular plane लेते हैं. उस plane में एक और oscillation हो रही है, ऐसे inside out. तो मैं डिपिक्ट करने की कोशिश करता हूं like this कि ये मान लें this is an oscillation which is now perpendicular to the plane of this board. तो एक plane में ये oscillation which I represent say as the oscillations shown by electric field vector. So these are the oscillations shown by electric field vector, that is E vector. So this is E vector with respect to time, and on the other side I show the oscillations carried out by the magnetic field vector which are perpendicular to the plane in which electric field vector oscillates. So जो ये red vector है, this is B vector, that is magnetic field vector, और इसका जो peak value है, ये peak value यहां से लेके यहां तक, that peak value will be denoted by B0, और इसका जो ये peak value है, which will be the peak value denoted as E0. We have just now said that the ratio E0 divided by B0 is always equal to C for an electromagnetic wave. The electric vector and magnetic vector seem to be of equal footing. ये बराबर हैं, सिर्फ फर्क है ये इस प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, ये इस वाले प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, perpendicular to it. लेकिन इनमें जब हम इलेक्ट्रिकल फिनोमेना लेते हैं, there is a polarization phenomenon which is induced by the electric field vector
when we send electromagnetic wave into a medium. So that process where an electromagnetic wave interacts with the particles of the medium makes this significant, or we sometimes call the electric vector. जो ये electric vector है, इसको हम कई बार optical vector भी कहते हैं. We also call it as optical vector. So soon, when you go into optics and talk about the phenomenon of polarization, so you will be referring to electric vector. But that does not mean that magnetic vector is less significant. No, magnetic vector has also its own significance. लेकिन वहां पर हम electric vector को ज्यादा useful पाते हैं. So that way we have the optical vector name given to electric vector. Now as far as this process goes further, जब हम इस process की आगे बात करते हैं, हम देखते हैं कि जो electromagnetic wave एक medium में enter करती है, उस medium में क्या करेगी? In a medium which is not there, that is vacuum, we have c square equal to 1 by mu naught epsilon naught. Now think of a medium where velocity of this wave is v. V is velocity in medium. You can think of glass, you can think of water, you can think of air, anything of that sort. So this becomes equal to 1 by mu r into mu naught multiplied by epsilon r into epsilon naught. You understand what I have done? कि अगर आप बेसिक मैनिपुलेशन पर जाएंगे और कूलम्स लॉ, जब हम कूलम्स लॉ लिखते हैं, इन एब्सेंस ऑफ ए मीडियम वी राइट 1 by 4 pi epsilon naught into q1 into q2 by r square. लेकिन जैसे हम मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं, द वैल्यू f becomes 1 by 4 pi epsilon naught multiplied by epsilon r, जिसको आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, into q1 into q2 by r square. Same is true for magnetism. So mu r is now relative permeability of the medium, epsilon r is the relative electric permittivity of the medium, and I can write this equation now like this. I have 1 by mu r into epsilon r multiplied by 1 by mu naught into epsilon naught. ये आपको याद है कि 1 by mu naught into epsilon naught c square के बराबर होता है. So I'll get v square is equal to c square divided by mu r into epsilon r. देखिए ये जो रिलेशन है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूं दोनों साइड, और आई राइट इट लाइक दिस, दैट आई हैव स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर एज v, स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर एज c, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ mu r into epsilon r, और I express this equation like this, that now we have the relative permittivity and relative permeability of the medium, like square root of mu r into epsilon r is equal to C by V. This ratio C by V is called as refractive index of the medium. So the refractive index of medium becomes equal to C by V. In other words, refractive index of medium is equal to square root of mu r, which is relative magnetic permeability, multiplied by epsilon r, that is the relative electric permittivity. As I said earlier, that ये जो इक्वेशन है c square is equal to 1 by mu naught epsilon naught, एक यूनिफाइंग इक्वेशन है बिटवीन ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. तो वो यहां पर अब क्लियर हो रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसकी बात हम ऑप्टिक्स में करते हैं हैज सम रेलेवेंस विद द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एंड magnetic permeability of the medium as you see it here. Now the next property of electromagnetic waves is sometimes we talk about intensity of electromagnetic waves. तो intensity हम ऐसे define करते हैं, intensity is energy acting or energy which the electromagnetic waves will make to fall per unit area per unit time. Per unit area per unit time. तो अगर मैं इसको लिखूं that energy is U, area is A, and time during which this energy falls is T. So I have the relation that intensity is equal to energy divided by area into time. Now what is the energy carried out by an electromagnetic wave? The energy carried out by an electromagnetic wave is stored in the form of the electric vector oscillations and the magnetic vector oscillations. तो जैसे आप एक मैकेनिकल वेव में एनर्जी की बात करते हैं, in the similar manner we have the electrical field and the magnetic field storing energy in an electromagnetic wave.
So in terms of electric field, if I have to write intensity, तो intensity हो जाएगा 1/2 epsilon naught into E0 square. E0 is peak value of the electric field multiplied by C. अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में लिखें, so it will be 1/2 into यहां E की एप्सिलॉन नॉट की जगह हो जाएगा 1/μ0 into B0 square into C. और ये आप देख रहे हैं that this is the average energy which is carried by electric field and magnetic field multiplied by C that gives us the intensity of an electromagnetic wave. आप इसमें एक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, जैसे ये रिलेशन जो है, I may introduce the RMS value of electric field which we sometimes prefer to write, क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू E0 square by 2, ये square by 2 into C. So this can be written as epsilon naught into, आपको याद होगा that E0 divided by under root 2 is equal to ERMS. So this will be ERMS whole square, क्योंकि ये 2 जो है इसको मैं under root 2 लिख सकता हूं. E0 by under root 2 is ERMS square into C. So ये अगर कहीं आप देखें that RMS value is being used, convert the RMS value into the value that is peak value, and you can do it that way. And then furthermore we have a ratio जिसको हम intensity divided by C लिख देते हैं. So intensity divided by C is speed of light, intensity divided by C, what it gives us, it is what we call as, इसको मैं U by C लिख सकता हूं, U by C. So U is so it is I by C. I is intensity, C is the value of 3 into 10 raised power 8 meter per second. This ratio I by C is called as the radiation pressure. So whenever you think of an electromagnetic wave punching upon a surface, जब इस surface पर गिर रही है, assume कि it is a shower of bullets जो गिर रहा है, and that is producing some pressure on the surface which we call as radiation pressure. We also have the value called as the momentum of an electromagnetic wave. After some time, once you go into the dual nature of radiation, these terms will be of significance. So if I say what is the linear momentum associated with a wave of electromagnetic wave, the definition for linear momentum of an electromagnetic wave is the energy divided by C. So this is called as momentum of electromagnetic wave. If I denote it by small p, as we do in case of particles, then this will be U by C. और आपको पता है कि जो U की वैल्यू है वो आप यहां से ले सकते हैं. This is the average value of U, this much. So this would be the value of U by C that will be giving you the linear momentum of the electromagnetic wave. अगर एक सरफेस पर electromagnetic wave आती है और completely absorb हो जाती है, the absorption of that will lead to imparting of an momentum to the surface. That momentum will be U by C or P. P, you understand, is now U by C. अगर ये वेव आई सरफेस पर बाउंस किया और बिल्कुल रिफ्लेक्ट होके आ गई, देन यू विल अंडरस्टैंड कि आने के वक्त इसका लीनियर मोमेंटम P था, जाने के वक्त इसका लीनियर मोमेंटम P है. तो जो इसने रिफ्लेक्शन के टाइम पर, अगर ये एक नॉर्मल रिफ्लेक्शन है, दैट मीन्स इट केम, hits the surface perpendicularly and again goes back perpendicularly, then the momentum imparted to the surface will be P minus P, that is equal to 2P. तो इसका आप ख्याल रखें कि एब्जॉर्प्शन के वक्त जो ये मोमेंटम इंपार्ट करेगा दैट विल बी P, लेकिन अगर एक परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन हुई देन द मोमेंटम इंपार्टेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टू द सरफेस विल बी 2P. वी कैन थिंक ऑफ नाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज, जैसे मैंने कहा कि एज बीम्स ऑफ पार्टिकल्स विच कैन इंपार्ट मोमेंटम और विच कैन गेट समथिंग लाइक दिस, कि दे कैन exert a pressure also. So what we call as radiation pressure and the momentum associated with an electromagnetic wave. Next property we realize is that electromagnetic waves, although they do not carry a mass, but they have a momentum. इसका आप ख्याल रखें, that will be later resolved. और they are electrically neutral. कई बार हम देखते हैं कि इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड है
और मैग्नेटिक फील्ड हैं, सो दे मे बी चार्ज्ड बीम्स ऑफ एनर्जी. नो, ये कोई चार्ज्ड बीम्स नहीं है. दे आर नॉट एज सच द चार्ज्ड पार्टिकल्स. दैट वे एन electromagnetic wave, if compared to a beam of electrons, जब हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं या मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, वो किसी एक डायरेक्शन में जाके डिफ्लेक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स या बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट लाइक द चार्ज्ड पार्टिकल्स जो कहीं डिफ्लेक्ट होंगी. दे विल पास अनडिफ्लेक्टेड इन ए मीडियम. नाउ इफ वी थिंक अबाउट द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मान लें ये मेरे पास एक सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया पर परपेंडिकुलरली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिर रही है. इट इज फॉलिंग नॉर्मल टू द सरफेस एरिया. फिर इस सरफेस एरिया को जो रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होगा, दैट रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर per unit area per unit time to this surface, which is normal to the direction of electromagnetic wave, is called as the Poynting vector. So this is Poynting vector. Poynting vector is the name given after the name of Poynting, who was a scientist or a physicist जिसने इस पर बात की. Then we write the Poynting vector S as 1 by mu 0 into जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ. तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बोर्ड के प्लेन में है, जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर है, देन व्हेन आई कैरी आउट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ E and B यूजिंग द राइट हैंड रूल, सो आई टेक डायरेक्शन ऑफ E, दिस मार्कर इज द डायरेक्शन ऑफ B, so when I write E cross B, thumb gives me the direction of S. So you will see that direction of S will be perpendicular to the plane formed by E and B. So we take E cross B as this, S is in the direction, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आप यहां से फिर निकाल सकते हैं. You can solve some problems related to it if it is required. We have furthermore to talk about the spectrum of electromagnetic waves, और उस स्पेक्ट्रम के डिफरेंट पार्ट्स में किस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अप्लाई करते हैं इन द डे टू डे लाइफ, दैट वी हैव टू सी. सो वी हैव to sum up these properties. तो जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया, I will be putting a slide at the end of this lecture that will sum up these properties. You can add some more on your own. Thank you.